Right now we can go for the fourth unit. Before that, we have completed geomorphology, that is about lithosphere. Then climatology, that is about atmosphere. Then oceanography, that is about hydrosphere. And this is biogeography. This is about the biosphere of the earth. So it includes mainly the soil. So when we say about the soil, like water, like air, this soil is also an important part of earth which have to sustain life on the earth surface. Earth surface means life के लिए like the water, like the air, ये soil भी बहुत जरूरी है. Because for the growth of plant, for the growth of for the growth of plant, ये तो बहुत जरूरी है. So let's see the formation of what is soil, the formation of soil, the factors which influence the formation of soil, and the major type of soils. So soil is actually the loose material that covers the earth's surface. In definition, soil is the thin layer of material covering the earth's surface and is formed from the weathering of rocks. We know that the primary output that is being आपका किसी का ये ऑन है क्या माइक? So the primary factor which build the earth's surface is mainly the rocks. When the molten material, that is magma or lava, which is coming from the mantle area, comes to the earth through the vents or different fissures, वो तो बाहर आ जाएगा, and when it solidify, it will become crystallized rocks. ये rock बन जाएगा. So the second output, that is from the rock, the secondary material that we are getting is the soil. When the rock weathered, we will get the output, that is soil. The other definition, soil is the biologically active porous medium that has developed in the upper layer of the earth crust. Earth crust का upper layer में है, and it is biologically active because the plants are growing there, humans or animals are existing there. So for the existence of all the biological organisms, the soil is the major supporting factor. So it is very biologically very active soil. Porous means it will allow water, it will allow air. Then only the soil can feed. The soil can feed plants. Plant को feed करने के लिए there should be some transmitting way. So the soil is also a porous medium. तो यहाँ क्या होगा? ऐसे डेवलप एरिया है. अभी रॉक सोचो, रॉक इज नॉट, ये तो नॉन पोरस है, वो तो अभी पोरस नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं घुस पाएगा, बहुत टाइम लगेगा. नॉट लाइक द सोइल. एंड बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए भी ये तो बहुत मुश्किल है. उधर रॉक के ऊपर प्लांट नहीं होगा, प्लांट को ग्रो करने के लिए मुश्किल है. So for that, soil is required. So soil is biologically active area and it is porous medium that has developed on the upper layer of the earth crust. And the soil mainly consists of minerals, organic materials or the humus, then air and water. Different minerals होगा, whether it is oxygen, whether it is nitrogen, जो भी हो, there is lot of mineral content क्योंकि rock is made of minerals. Rock is made of minerals. तो इसका parent material कौन होगा? Soil का parent material mostly the soil से. तो 50%, almost 50% is made up of this minerals होगा. And the remaining consists of organic materials. Organic materials means अभी जो living being है, living things है, उसका excretion होगा, नहीं तो उसका dead remainings होगा. वो भी it's also a part of soil. Soil का अपना part है. So that
also consistent in soil. Then the air and the water. We know that when we dig the soil, we will get water. Water in a saturated way. Water will enter in the porous areas or the gaps in the soil, and it will stay there. Then only the groundwater we are getting is the aquifer. Aquifer में है. So all this comes under the soil. Soil के नीचे ये सब आएगा. And soil also it varies from one place to another. Whether it is horizontal distribution हो, whether it's a vertical distribution हो, soil will change, because we know that other than the rigors, the soils is usually a depositional feature, like sedimentary. When we studied about the sedimentary rock, we studied. So इसका deposition है. Deposition होने से जो भी deposition हो, that is a periodic way. That will happen in a periodic way. It will take time. एक day में नहीं बन पाएगा. It will take millions of years to make soil. पहले वो रॉक बाहर आना है, उसका वेथरिंग होना है, उसको तो ट्रांसपोर्ट करके एक जगह पे डिपॉजिट करना है, मल्टीपल डिपोजिशन होनी चाहिए. सो बेस्ड ऑन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो द सोइल कैरेक्टर विल आल्सो चेंज हॉरिजॉन्टली. एक जगह का डिपॉजिट जैसा नहीं होगा दूसरा जगह का. इट विल वेरी हॉरिजॉन्टली. वर्टिकली मींस अभी एक लेयर डिपोजिशन हो गया, पहले 10,000 ईयर के पहले हो गया, दूसरा 5,000 ईयर्स के पहले हो गया, फिर अभी नया वाला हो गया. तो देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स इन द सोइल. तो ईच ये सोइल का कैरेक्टर अलग होगा, ये सोइल का कैरेक्टर नहीं होगा ये सोइल का. तो ऐसा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इट शोस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. द मेन थिंग इज बिकॉज इट इज differ because of where and how they have formed. Where कहाँ पे ये हो गया है, कैसे ये हो गया है, और कौन सी टाइम में ये हो गया है. All these matters. Because of the same, the soil will differ from one place to another. And as I said earlier, for the existence of plants, humans, or animals, soil is much required because the soil provides nutrients to the plants. And the source of food for humans, animals, and birds. Source है अभी, because plants is mostly depending on, so whether it is herbivorous, whether it is omnivorous, whether it is carnivorous, जो भी हो, it is a food chain. Food chain is connected. तो पहले होनी चाहिए primary sources actually the plants. तो plants का growth के लिए, nutrition के लिए the soil is supporting. So for the existence of all these human, whether it is humans, whether it is animal, whether it is bird, whether it is plants is soil is a very much required thing. Then the soil profile. This is actually not in the syllabus, but there is high chance of asking question from this side. So what is soil profile? I said soil vary from place to place. It will vary horizontally and it will vary vertically. Well, vertically भी इसका change होगा. So इसका vertically भी इसका change होगा. Vertically कैसे होगा? In the vertical distribution of soil based on time period and the components. Components के वजह से होगा, नहीं ये तो time period के वजह से होगा. It will create, the soil will create multiple layers. I said अभी 10,000 million years ago एक deposition हुआ था soil का, उसके ऊपर अभी 5,000 years ago एक हो गया. ऐसे मल्टीपल डेट में इसका डिपोजिशन हो जाएगा. Daily there is deposition, some small amount, even it is small amount, there is some sort of deposition. Because of the same time period होगा, components उसका mineral composition भी अलग होगा. The soil will have different layers. One layer at the bottom layer होगा, उसके ऊपर एक layer होगा, इसके ऊपर ऐसे layer होगा. So this kind of layering or stratification of the soil
for mainly this is identifying mainly for the educational purpose. इसके ऊपर research करने के लिए और इसके ऊपर study करने के लिए this profiling we will use. This kind of layering and that study we can say it as soil profile study. Based on this soil profile, the vertical distribution, we can say there is two type of soil or two type of soil profile. One is the top soil, जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, that is the top soil. And जो नीचे है, that is the subsoils. Top soil हो गया, सबसे ऊपर वाला जो soil है, that is what we are seeing. अभी जब हम घर से बाहर जाता है और जो देखता है ऊपर, that is actually the top soil. And जो नीचे है, if we dig a well, we can see multiple layers there. So that all those we can say it as subsoil. Topsoil is maximum. ऐसे नहीं बोल पाएगा, but approximately 1 to 2 meter तक होगा topsoil. इसके नीचे अलग-अलग characteristic होगा, अलग-अलग zones होगा, layer अलग-अलग layers होगा. That is the subsoil. So these subsoils and topsoils are again classified into multiple horizons. That is called the soil horizons. There is mainly 4 horizons, actually 3 horizons. If we take the topsoil also, there is 4 horizons. One is O horizon, that is mainly has organic content ज़्यादा है. Then O horizon, then A horizon, B horizon, and C horizon. So these are the major horizon, or these are the major soil profiles that is being identified throughout earth में जहां भी जाओ, we can say these are the major horizon. इसका depth ऐसा नहीं बोल पाएगा, but because it will vary. अभी एक जगह में 1 मीटर है, दूसरे जगह पे 5 मीटर होगा, तीसरे जगह पे वो तो 0.5 मीटर होगा. So we can't say this is limited to this area and this area. This may vary based on the deposition and the time period. अभी एक तो birth time से deposition एक ही तरह का हो गया है, so there will be high, उसका तो depth birth ज्यादा होगा वो soil. So we can't say this is limited to this height to this height. ऐसे नहीं बोल पाएगा. This depth to this depth ऐसे नहीं बोल पाएगा. And the first horizon is the O horizon. It mainly consists of plant litter है. जो प्लान है उसका लीफ नीचे गिरेगा, that is actually humus. वो डिपोजिट होगा सोइल के सबसे ऊपर पार्ट में, which accumulate on the soil surface actually. And it is actually we know that it is dark in color, dark है. भी forest में गया उसके ऊपर if you look you can see dark color soil because there is plant litter. और प्लांट का जो लीव्स है वो सूखा हुए गिर गया होगा, नहीं ये तो कुछ एनिमल मर गए उसके ऊपर, वो पहले वाला जो फॉर्मेशन है, that is actually O horizon. It is not visible everywhere, but as it is mostly organic, we can give it as O horizon. Mainly the output that is being made by the plant and the animal decomposition. उसका decomposition से अभी plant का है तो leaf का तो ये तो सूखा हुआ गिरा होगा, ऐसा कुछ deposition होगा. And this soil will not have more than 10,000 years old. उतना recent है इसका formation. Then comes the major soil profiles. So horizon is not available throughout. It is limited to particular areas only. But this A horizon, B horizon, and C horizon can be visible throughout. So first horizon is the A horizon. If you look at this picture, you can see this. This is the top soil, top area में है. It has high humus content. Humus content उसमें organic deposition ज़्यादा है. जो organic means जो plants का और animals का waste होगा, नहीं है तो decomposition होके जो नीचे गिरा होगा, वो सब इसमें ज़्यादा है. Because this is the topmost soil. Humus rich topsoil where the nutrient, organic matter and biological activity are high. Because as this is सबसे ऊपर है तो we know that biosphere is mostly limited to
दिस तो इसका डिपोजिशन होगा इसी लेयर तक, इसका डिपोजिशन सबसे ऊपर लेयर में ही होगा एंड इट इज यूजुअली डार्क कलर होगा, वो सबसे ओरिजिन सबसे डार्कर है, उसके नीचे होगा ये वाला एंड दिस इज आल्सो डार्क इन नेचर, क्योंकि यहाँ भी ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है। अभी फॉरेस्ट में आप लोग गया हो तो आप सोइल में देखने से यू कैन सी दैट इज डार्क इन कलर, डार्क ब्राउन होगा, डार्क नहीं ये तो ब्लैक कलर में भी होगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ ह्यूमस कंटेंट। देन कम्स द बी होराइजन। बी होराइजन इज एक्चुअली क्ले है, क्योंकि यहाँ जो बड़ा यहाँ जो soil actually there is, if we divide the soil based on grain size है तो पहले होगा gravel हो गया, silt हो गया, then clay lumi हो गया, then clay means very fine है। तो यहाँ से जो चीज है वो very fine area soil है, वो फिल्टर होके नीचे आएगा, इस लेयर पे सबसे नीचे लेयर में आएगा। So there is a high deposition of clay at this point at B horizon. So B horizon is rich in clay, often less fertile है, क्योंकि ये तो इधर मैक्सिमम होगा क्ले कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ ज्यादा होगा, इसलिए तो उधर उतना ज्यादा पानी ज्यादा है तो उतना फर्टिलिटी नहीं होगा। एक्चुअली वाटर शुड बी ऑप्टिमम, यहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है एंड इट इज जनरली लाइटर कलर when comparing to the A horizon and B O horizon, it is comparatively lighter color, इसका nature है। And almost biological activities is nil, there is no or less biological activities। If you look at this picture also you can see only एक पेड़ का root इतना तक आया है, तो कम, बाकी तो इधर देखो पूरा it is limited to A horizon, तो उतना deep root tree का ही root इतना नीचे आएगा, बी होराइजन तक आएगा। As it is clay content, we know that it will almost work as a impermeable, almost impermeable है। It is porous है, जब when it is not, it is dry, it is porous, it will allow water, but when it is wet, इसका क्या characteristic होगा? It is almost impermeable होगा and maximum saturation level जल्दी हो जाएगा इस एरिया का। Then comes the sea horizon, that is underlying weathered rock है। We know that at this सबसे नीचे होगा weathered rock होगा, इसके ऊपर soil deposit, फर्स्ट लेयर हो गया B horizon हो गया, इसके ऊपर A horizon हो गया एंड इसके ऊपर 3 लेयर में O horizon at some part में ऐसा C horizon भी होगा। तो ये हो क्या है सबसे ऊपर, दिस इज एक्चुअली हार्ड रॉक था, बिकॉज ऑफ वेदरिंग इसका ये जो upper portion of this hard rock, this will be weathered। तो इसमें क्या होगा, लूज सोइल मटेरियल और लूज रॉक मटेरियल होगा इस लेयर पे, दैट इज एक्चुअली द सी होराइजन। सो सी होराइजन के नीचे क्या होगा, देयर इज हार्ड रॉक और हार्ड क्रिस्टल रॉक होगा सबसे नीचे, उसके ऊपर वो हार्ड वेदर्ड रॉक का जो वेदर्ड पोर्शन है, लाइक द फाइन ग्रावल साइज का और पबल साइज का, जो पत्थर साइज का, इफ यू लुक एट दिस ऐसा पत्थर साइज का वो है डिपोजिशन, दैट कम्स द सी होराइजन। इसके ऊपर ग्रावल वो क्ले साइज का जो ऊपर से जो डिपोजिशन फिल्टर करके जो क्ले नेचर आता है वो इसके ऊपर आकर पहले डिपोजिट करेगा। सो दैट इज बी होराइजन एक्चुअली क्लेई एंड ए होराइजन सबसे टॉप में होगा, दैट इज एक्चुअली द टॉप सोइल विच इज एक्चुअली हाई ह्यूमस कंटेंट सोइल है, डार्क कलर है। सो दिस इज हाउ द सोइल प्रोफाइल इज बीइंग distributed। First one is O horizon, then A horizon, B horizon and the C horizon। C horizon के नीचे होगा hard rock। The vertical distribution of soil। Generally बोलने से two profile है, top soil and the subsoil। Then formation of soil। We all studied about in geomorphology में we have studied about weathering, the mechanical decomposition, disintegration or chemical decomposition of the rock material, that is actually the weathering।
वो उतना बड़ा हार्ड रॉक को तोड़ के, नहीं तो विथ डिफरेंट मेथड्स, वेदर इट इज फिजिकली उसमें फोर्स एक्सर्ट करके, प्रेशर एक्सर्ट करके वो करेगा, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। नहीं तो कुछ केमिकल ऐड करके, कार्बोनेट का ऐड करके, कार्बन कंटेंट जो आसमान से लेके आता है, वो सॉरी एटमॉस्फेयर से लेके आता है उसके वजह से, और कुछ केमिकल यूज करके इसको तो डिकम्पोज करके तोड़ के आता है। दैट प्रोसेस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये वेदरिंग होने का रिजल्ट में क्या होगा? सोइल। वन ऑफ द रिजल्ट, द डिपोजिशन फीचर इज द सोइल. The soil formation is mainly influenced by the biological, chemical, geological and topographical factors. बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन होगा? अभी पर्ड हो गया, जो उसका अपना रूट से मैकेनिकल प्रेशर करेगा, अपना रूट से। अभी एक पत्थर है तो अपना रूट में कुछ गैप है तो वो रूट इसके अंदर घुसेगा, फिर ये बड़ा होने से ये पत्थर को तोड़ देगा, दो साइड में बना के ये तो पत्थर को तोड़ देगा। सो दैट इज एक्चुअली बायोलॉजी, पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग है। नहीं है जो कुछ एनिमल्स ऐसा है वो बोरो करेगा, इसमें ऐसा डिग करेगा, है देयर इज बड़ा बड़ा डिग बना के इसका जो पोर्शन है वो वेदर करके नीचे गिर जाएगा। So that is those are actually comes under the biological weathering. Then climate. Climate का influence कैसा है? We know that we have already studied this, so don't want to go in detail. So first temperature होगा, then precipitation होगा। तो precipitation नहीं है तो water का presence होगा, water का ये हो गया। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से the rock will expand, rock expand करेगा, rock का जो अंदर का जो minerals है वो it will start expanding, and when the temperature comes down even below freezing point the rock will contract. तो ऐसा बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ऐसा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने से धीरे धीरे रॉक के अंदर क्रैक बन जाएगा। देन इन दिस क्रैक अभी पानी घुसेगा, वाटर विल fall inside, and when the water gets will convert to be ice बन जाए से ice का वॉल्यूम ज्यादा है, तो that ice will push, ये क्रैक को दोनों साइड पर पुश करेगा, and this crack will ये बड़ा हो जाएगा। and what happens in the morning time, ये पानी ये ice will melt and this पानी will enter more space, जो क्रैक ज्यादा हुआ था उसी जगह पे भी पानी घुसेगा। देन क्या होगा? दिस विल स्टार्ट, वो रात में आइस होगा, फिर दिस विल अगेन पुश, ऐसा पुश करेगा, तो यहाँ और ज्यादा क्रैक बन जाएगा। फिर द सेम प्रोसेस रिपीट, आइस होगा, ऐसे ऐसे इसको तो दो साइड में निकाल के तोड़ देगा, एंड देयर विल बी रिमेनिंग। तो दिस इज हाउ, दैट इज एक्चुअली द फिजिकल वेदर। मैकेनिकल प्रेशर से जो टेम्परेचर एंड वाटर का वो एफर्ट से, वाटर एंड आइस इसके एफर्ट से it will break, it will give pressure to the soil rock and it will break. That kind of weathering we can say it as physical weathering or the mechanical weathering. Then chemical में क्या ऐसा है? This will actually happens mostly in the carbonate rock जहाँ पे है उसी एरिया पे, नहीं है तो लाइमस्टोन, एक्चुअली लाइमस्टोन का कार्बोनेट रॉक वो एरिया में मैक्सिमम क्या होगा? वो डिसॉल्व करेगा पानी, इट विल मेल्ट, इट विल डिसॉल्व विथ वाटर, वो एरिया में डिसॉल्व करके उसको तो लेके जाएगा। दैट इज एक्चुअली केमिकल, कुछ केमिकल इसमें डिसॉल्व होकर पानी का हाइड्रो, वी नो दैट इज H2O है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो इसके साथ वो रॉक का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इट विल बिकम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, एंड इट विल डाइल्यूट, सॉरी इट विल डिसॉल्व इन दिस वाटर एंड इट विल मूव अवे। So that kind of weathering we can say it as chemical weathering. So chemical weathering, physical weathering और biological weathering से क्या होगा? रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा और मिनरल इसमें से निकल जाएगा। So these minerals when get accumulated accumulated होगा अभी पत्थर से आने से, फर्स्ट स्टेप इज इसके नीचे ही, इसके बिल्कुल नीचे ये तो
ऐसे डिपॉजिट करेगा. This is actually the this is actually the rigor. या rigor बोलेगा इस soil को. तो इसका rigor deposition करेगा. Later क्या करेगा? Wind, water, glaciers or the gravity. Gravity, when there is slope, there will be gravitational attraction होगा. तो ये denudation agents है. ये denudation agents ने इसको तो ये sediments को जो rigor था इसको उड़ा के स्लोप में, फिर स्लोप का नीचे इस जगह पे डिपॉजिट करेगा. Wherever this wind, water and glaciers move, it will deposit. लेटर स्टेज में इधर से उड़ा के एक जगह से उड़ा के दूसरे जगह पे डिपॉजिट करेगा. एंड दिस डिपोजिशंस इज एक्चुअली द सोइल्स. दिस डिपोजिशंस आर एक्चुअली सोइल्स. एंड दिस इज हाउ द सोइल्स फॉर्म्स. इन द इनिशियल स्टेज देयर विल बी वेदरिंग होके ये नीचे गिर जाएगा. इसको तो उड़ा के ट्रांसपोर्ट करके इसे कहीं पे एक्युमुलेट करेगा, नहीं ये तो डिपॉजिट करेगा. एंड द रिजल्टेंट थिंग इज देयर इज, वी नो दैट इज सोइल बन जाएगा. दैट इज एक्चुअली वी विल से इट एज सेडिमेंट्स बन जाएगा. सेडिमेंट्स आर एक्चुअली मोस्टली इट इज मेड ऑफ सोइल्स. So this is how the soil is forming through physical weathering, chemical weathering, and the biological weathering. So what are the factors which influences this soil formation? ये है physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. And soil formation अभी हम explain किया है. इसमें क्या-क्या चीज आएगा? First one is the parent rock. That is actually the parent rock. Parent rock क्या है? The rock, primary rock, whether it is igneous rock, whether it is metamorphic rock, whether it is sedimentary rock, जो भी हो, that is from where the soil is coming. ऐसा एक parent rock होगा. ये जो parent rock है, ये parent rock का characteristic will be transmitted to this soil also. If the parent rock is mainly made up of quartzite, so the soil is also mainly content is quartzite. उसमें वो so soil में भी quartzite का presence ज्यादा होता है. तो ऐसा है. If it is sedimentary rock and if it is made of, अभी इसके अंदर अभी कुछ अलग-अलग का फॉर्मेशन, अलग-अलग फॉर्मेशन है एंड इसका भी वेदरिंग हो गया, तो रॉक में भी ऐसा जो भी हो, इट इज मेड फ्रॉम द सेम सेडिमेंटरी रॉक, तो इसका भी सेम कॉम्बिनेशन होगा सोइल में. तो एवरी सोइल इनहेरिट्स traits from the parent material from which it formed. अभी सोचो, in the coastal areas of Kerala or Tamil Nadu, mainly in Kerala, Karnataka coast, you can see monocyte. That is actually radioactive minerals, monocyte. So when we see the source, yes, कहाँ से मिला है? क्योंकि this is actually the coastal deposition है. Coastal sand में इसका deposition है monocyte का. When we find the source, इसका source find out करने से that has come to Western Ghats. Western Ghats and Eastern Ghats आप सुना होगा. That is actually the hill ranges. तो western side में इंडिया का जो western side में जो extension है, that is actually the Western Ghats है. तो ये आ गया Western Ghats से. तो Western Ghats में देखने से there is a rock. वो rock से इसका deposition आया है. That is how we can. तो ऐसा connection है. तो कितना दूर से, almost 400 किलोमीटर दूर है ये Western Ghats. तो उतना Western Ghats से ये उधर तक ये मिनरल उधर तक आया है. So the soil has the inherent capacity, inherent traits or the inherent characteristic of that particular rock. The parent material is initial state of the solid matter making up the soil. So parent material वही है जो पहले वाला वो solid state में है, which make up the soil. That is its parent material. Mainly consist of crystalline, वो rock है. Rocks and the mineral. We know that the soil is made up of soil, rock and minerals. Actually, it is minerals that is coming from the rock.
So the parent material is always a consolidated or crystalline rock. All the characteristics of the soil, I said it is inherited from the parent rock. Whether it is the mineralogical combination, mineral composition hai, whether it is the texture of the soil, whether it is the stratification of the soil, jo bhi ho, that is been getting from the parent material. So the foremost influencing factor is the parent material. तो इस parent material में there is action of weathering. Weathering का action कौन सी में होगा? इस parent material में होगा. Parent material will be the hard rock. Then comes the living organisms. That is a second factor which influence the soil formation. तो living organism बोलने से जो भी organism है which like plants हो, नहीं तो कुछ even हम bacteria हो, fungi हो, उतना छोटा organism से इतना बड़ा bigger trees, all these influences the soil formation. When I say about the physical weathering, इसमें हम बोल biological weathering के बोलने से हम बोल दिया वो plant का root पत्थर के अंदर घुसेगा, when it will get bigger the पत्थर ऐसा तोड़ देगा. So that is actually helping in soil formation. Weathering को वो help कर रहा है. दूसरा चीज है अभी if it is अभी कुछ burrowing animals है like a rat, when it is digging to the earth, ये क्या करेगा? वो नीचे का soil को ऊपर, वो नीचे का वो sediments को ऊपर लेके आ जाएगा. So that is actually mixing of soils को mix करेगा. So for all this there is helping from the living organisms. And I said soil is made up, अभी इसमें 20 almost 20% is formed by humus content है. Humus content क्या है? It is the dead remainings of this living, जो पहले living organisms था, इसका either it is इसका excretions होगा, नहीं तो dead remainings होगा. All these help in the formation of the soil or even changing the composition of the soil. This is how the soil living organisms help. Then comes the climate. So पत्थर, that is the parent material को weather कर रहे हैं. Weathering के लिए सबसे important चीज है temperature, change in temperature. Then comes the water, precipitation, नहीं तो wind action. किसी चीज का इसका help चाहिए. So all these come under the scope of climate. Whether it is temperature. Sir. Yes. ये हम लोग भी जीएस क्लास अटेंड करते हैं ना, लेकिन जीएस क्लास अभी हो रहा है बोल रहे, किसी से हो रहा है? जीएस क्लास ये तो हमारा क्लास का टाइमिंग है ना. हाँ पर जीएस क्लास भी 5 में करेगा, वो हो रहा है बोल के दोस्त लोग बोल रहे हैं. असली में ना हमको ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है. सर जो बोल दिया अभी ज्योग्राफी क्लास 4:30 से लेने के लिए बोल दिया है, हम ले रहे. हाँ उसका वो जहाँ पे आप लोग जो कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हमको कुछ आइडिया भी नहीं है. हाँ. It would be better if you can consult that with पंकज सर. ओके सर. उधर जाना है क्या अभी? नहीं सर, इसको कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद में वीडियो देखना पड़ेगा, अभी इसको आधा कैसे छोड़ेगा. हाँ ओके दैट्स गुड. सो ये चीज है क्लाइमेट. तो वेदरिंग फैक्टर्स, whether it is temperature, whether it is precipitation, whether it is wind action, ये सब आएगा under the scope of climate. When there is humid climate है, humid climate है तो ज्यादा temperature आएगा, ज्यादा precipitation आएगा. So that will provide more material for weathering. So climate, any soil have the imprint of this climate. The soil in the humid region is entirely different from that is in arid region. Arid region का जो soil है, that is mean almost dry area, और desert area का जो soil है, it is entirely different from mountain area का. Sorry, mountain area बोलने से हमारा वो टुंड्रा टाइगा क्लाइमेट है ना, ये जो चीज है उधर का क्लाइमेट एंडरली डिफरेंट होगा. नहीं ये तो अभी ट्रॉपिकल रीजन में आने से उधर का सोइल एंडरली डिफरेंट होगा. सो इट विल हैव इट्स ओन इम्प्रिंट्स. द सोइल विल वेरी बेस्ड ऑन द क्लाइमेट्स. द रेट ऑफ वेदरिंग
and the organic decomposition जो भी हो, it will entirely depending on the climate. Severe climate में weathering भी severe होगा. बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी डेजर्ट रीजन में कैसा है, सुबह टाइम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा एंड इवनिंग टाइम इट विल ऑलमोस्ट रीच अप टू द फ्रीजिंग पॉइंट. उतना टेम्परेचर वेरिएशन है एट द डेजर्ट रीजन और द एरिड रीजन, तो देयर वेदरिंग उधर बहुत ज्यादा हो जाएगा. एंड इन माउंटेनियस एरिया इफ इट इज इन रेन, अभी विंडवर्ड साइड में है तो इट इज, इफ इट इज इन विंडवर्ड साइड उधर ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा. जस्ट सी आवर अरुणाचल प्रदेश, इफ यू लुक here the climate is actually severe. If the rain, it will go for long term है यहाँ rain आने से. winter आने से बहुत ज्यादा ठंडा है, अभी hot आने से बहुत ज्यादा hot भी होगा. So the climate is extreme in the mountainous area because the earth needs more force to make them level. अभी mountain region को level करें, everything has to reach the entropy, final पेनी प्लेन तक लेके आना है. तो माउंटेनियस एरियाज में इसका एक्शन ज्यादा होनी चाहिए. सो क्लाइमेट विल बी सीवियर हियर. सो उसका आउटपुट क्या होगा, बहुत जल्दी ये पत्थर सोइल बन जाएगा, बहुत जल्दी. सो दैट इज हाउ द क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस. एंड इसमें क्या कौन सी चीज है, टेम्परेचर होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. एंड द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स होगा, विंड, वाटर, आइस, जो भी हो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बन जाएगा. सो दिस इज द अनदर फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सोइल. वन इज पैरेंट मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेंट मटेरियल, देन द क्लाइमेट, देन द ऑर्गेनिक मैटर, देन कम्स द टोपोग्राफी. टोपोग्राफी के बारे में हम अभी बोल दिया है, जो हिली रीजन में, माउंटेनियस रीजन में कैसे है. I said, when I said about the gravitational forces, I said about gravity. Gravity ज्यादा कौन सी जगह पे होगा, whether it will happen on slopy, gentle slopy region, whether it will happen on moderate slopy region, whether it is happen on steep slope. The weathering or the transportation will happen, erosion and deposition will happen mostly on this steep slope में ज्यादा होगा. This show the gradient. यहाँ gradient बहुत ज्यादा है, यहाँ gradient average है. That means यहाँ erosion and deposition average होगा. If the slope is less, very less, यहाँ erosion and deposition कम होगा. It's based on the topography. So soil formation is also, इसके नीचे बहुत ज्यादा deposition होगा soils का. यहाँ extensive होगा लेकिन थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होगा इस जगह पे. यहाँ में भी डिपोजिशन होगा लेकिन बहुत कम होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, देन द एस्पेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप. अभी सोचो, अभी इंडिया, यहाँ हिमालय है, हिमालय ऐसा मूव हो रहा है, यहाँ हमारा कश्मीर है, यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है. तो हिमालयन एक्सटेंशन इज फ्रॉम लाइक दिस, एंड हमारा मानसून आएगा साउथ वेस्ट मानसून है. तो साउथ यहाँ है, so, नीचे है, एंड वेस्ट होगा इंडिया का ये. दिस इज द साउथ वेस्ट रीजन, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट. सो द साउथ वेस्ट इज दिस रीजन. तो यहाँ से आ रहा है हमारा साउथ वेस्ट मानसून. तो जो माउंटेन है, माउंटेन का ये जो इसी साइड में, इस साइड में, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स इंडिया, इसी साइड में ज्यादा बारिश मिल जाएगा. तो यहाँ वेदरिंग बहुत ज्यादा है, because it is getting water, it is getting precipitation, so there is too much of erosion happen at this point. But on the other side, यहाँ क्या है, this is actually rain shadow region है, उधर बारिश कम है. तो क्या है, यहाँ erosion, deposition ये सब कम होगा comparatively to the this side. So the aspect or the direction of this slope is also very important in topography. So in topography, the important is a slope. Second one is direction of the slope. Then deeper soil forms at the bottom of the hill. Hilly area में क्योंकि उधर gravity ज्यादा है. Maximum soil formation. If you look the Ganga plain
actually it was a depression. ऐसा एक तो mountain area था and there was a depression. ऐसा एक depression. When the sediments Himalayan, this is actually Himalayan region, and there was a bigger depression in between the peninsular plateau and Himalaya के बीच में एक बड़ा सा depression था. And this was filled from the sediments deposition. यहाँ sediments deposition कहाँ से आया? Himalayan और ये plateau region से बहुत ज़्यादा deposition हो गया है. That is, we know that is alluvium soil maximum. तो ऐसा deposition हो गया है. This is actually फुट हिल रीजन था, तो यहाँ बहुत ज्यादा डिपोजिशन हुआ है. एंड द गंगा प्लेन वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन. तो उतना मैक्सिमम डिपोजिशन अभी कहाँ पे होगा? बॉटम ऑफ द हिल एरिया में ही होगा. इफ यू लुक आवर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में देखने से भी गंगा प्लेन इज सच ए डिपोजिशन. हिली, वो माउंटेन्स का फुट हिल का वो नीचे है, उसी एरिया पे सेडिमेंट्स डिपोजिशन, वो हिमालयन से उधर से जो सेडिमेंट्स लेके आया है, इसको यहाँ पे ही डिपोजिट किया है. वी नो दैट वेरियस रिवर्स, मेनली द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो भी हो उसका डिपोजिशन आएगा. तो गंगा एरिया में गंगा का वो ट्रिब्यूटरीज है, उसने उधर डिपोजिट किया है. whether it is Ganga, whether it is Yamuna, whether it is China, whether it is Devi, whether it is Damodar river, जो भी हो, गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है इसने तो डिपोजिट किया है. This is how the Ganga plain was formed. So topography is the another important factor. And so these are the major factors. One is parent material. For soil formation, parent material is very important. Second one is actually the climate factor, very important. Weathering के लिए climate factor बहुत जरूरी है. And for weathering, biological factor is also very important. Then the ये erode करने के लिए, transport करने के लिए, there should be some slope चाहिए. For that we need gradation और slope चाहिए. Slope का direction ये सब आएगा. Soil formation का other factor. Then finally the time factor. अभी ये सब है, parent material है, climatic change भी हो रहा है, slope भी है. But this will not happen in one day. It requires time. जितना ज्यादा टाइम है उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा. जो इंटरैक्शन के लिए अभी हम बोला है कैसे फॉर्मेशन है, वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रेनफॉल. वो एटमॉस्फेयर से कार्बन कंटेंट को लेके आएगा. नहीं ये तो वो वेदरिंग के लिए देयर शुड रिक्वायर इनफ टाइम देना पड़ेगा वेदर करने के लिए. एक दो दिन से पता तोड़ना इट्स पॉसिबल ओनली विथ एक्सप्लोशन. ह्यूमन को नहीं तो ह्यूमन को अपना हाथ से नहीं तो कुछ चीज से मैकेनिकली इट कैन ब्रेक, फिर भी सोइल नहीं बनेगा. दैट इज एक्चुअली पाउडर्ड रॉक बन जाएगा. दैट विल नॉट बिकम ए सोइल. सोइल इज अ नेचुरली forming earth material, naturally formed earth material. So we can't make rock directly, soil directly. It should be naturally forming. Abhi jo materials, construction material that we are using, sometimes there will be M sand, P sand, ऐसा भी बोल के sand आएगा, but actually that is human creation. That can't be say as soil. Soil is a natural material, so it requires time. Nature requires time for making this soil. So these are the major factors which influences the soil formation. First one is parent material, then climate, then living organisms or the biological aspect, then the topography, and finally the time factor. Now we can discuss about the type of soil. When we hear about the type of soil, usually we will think alluvial soil, red soil. Yes, of course, those are actually classification of soil. But mainly, when generally it is stating what is the type of soil, you need to go for the soil based on grain size. बड़ा grain size का, medium grain size का, छोटा grain size का, ये करना है.
So when somebody asks you classification of Indian soil, then you can go for alluvial soil, red soil, black soil, PT soil, ये सब soil के बारे में उसी टाइम में alluvial soil जो भी हो उसी टाइम में बोलना है. That is regarding classification of soil. When somebody asks you regarding the type of soil, you have to go for the grain size. जो grain size है उसके basis से we can divide the soil into mainly three. One is sandy soil, second one is silty soil or silt soil, then the third one is clay soil. ये तीन है important soil, that is based on the grain size. The first and important one is the sandy soil. So sandy soil, it is the soil first form. Soil जब first form होता है, actually it is sandy soil. जो पत्थर है, पत्थर तोड़ के जो आता है उसका साइज तो बड़ा होगा, quite natural. So that kind of soil we can say it as sand. So sand soil is the initial soil formed, and it consists of smaller particles of weathered rock. Direct वो weathered rock का smaller particles है. From so it is not matured, वो matured नहीं है. So this is the first type of soil formation. If you look at the particle size, it will vary from, for higher courses it is 2 mm to 4.75 mm है, जो bigger है. Medium में आएगा 0.4 to 0.2 to 0.4 mm में, and the smaller में आएगा 0.075 to 0.4 mm. So on an average, it is actually 0.1 mm or to 0.2 mm or 0.3 mm तक आएगा on an average. This is the soil texture here, and it will not support as ये तो हम बोलते हैं उतना matured soil नहीं है इसमें इसके अंदर. So this is not actually that much of fertile. It will not support high plant growth में, उसका support नहीं करेगा, because इसके अंदर जो पत्थर है, पत्थर जैसे तोड़ता है ऐसे ही होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक. So it is less fertile है, इसमें इसके अंदर low nutrient content है, and poor water hold. It is permeable है, बहुत ज्यादा permeable है. तो ऐसा वाला रॉक है, उसके अंदर पानी को इजी एंटर कर सकता है, ऐसे ही ये तो ट्रांसमिट करके जाएगा. अभी एक सैंड रख दिया, दूसरे जगहों पे क्ले रख दिया और सिल्ट रख दिया, तो पानी सबसे जल्दी जाएगा ये सैंड से. So it can't hold water that much, and it has less nutrients, so it is not fertile, and it is formed by breakdown or fragmentation of rocks like granite, limestone or quartz. जो भी हो, whether it is metamorphic rock हो, whether it is igneous rock हो, इसका जो पहले वाला result होगा this sandy soil. Then comes the second soil, that is silt soil or silty soil. तो इसका साइज कैसा होगा, वो सैंड साइज था उससे थोड़ा नीचे होगा, smaller than the sandy soil, and as the size is smaller it can hold better water. It can hold water, उसमें ज्यादा hold कर सकता है. Because of this same वो तो थोड़ा mature हो गया है, तो it has the ability of, it has the fertility. इसमें प्लांट को ग्रो करने के लिए इसमें ये ताकत है. इट इज वेरी फर्टाइल, इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट है. पहले वाले में जस्ट पत्थर जो तोड़ के ऐसा था सैंडी, उसमें से और एक टाइम लगा के सिल्टी सोइल बनाता है. वो ग्रहण को अगेन व्हेन इट्स ब्रेक इट विल बिकम सिल्टी है. सो इट हैज द न्यूट्रिएंट, बहुत टाइम है इसके अंदर, न्यूट्रिशन कंटेंट है इसके अंदर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे है. बिकॉज ऑफ दिस से दिस हैज द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स इसके अंदर ग्रो. एंड लुक एट द ग्रेन साइज, इट इज एक्चुअली 0.002 to 0.06 mm है, उतना छोटा है. So that comes actually medium range में इसका साइज होगा. सिल्टी सोइल सबसे बड़ा हो गया सैंड, उसके नीचे हो गया सिल्ट सोइल. देन फाइनली
The smallest one, that is clayey soil. तो ग्रेन होगा वेरी फाइन ग्रेन्स है, उतना छोटा है, 0.002 mm के नीचे है इसका ग्रेन साइज। एंड इसका क्या है, दिस इज एक्चुअली इसमें भी प्लांट ग्रोथ होगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जल्दी सैचुरेट होगा, वाटर होल्ड कर सकता है, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट इट विल बिकम इम्पेरमेबल। उसके बाद में उसमें अभी आप लोग सुना देखा होगा, इफ यू आर कुछ पैडी फील्ड में गया हो तो सबसे ऊपर होगा सिल्टी सोइल होगा, इसके नीचे होगा क्ले, तो बीच बीच में देखा होगा ये क्ले कंटेंट को निकालेगा, उधर से उड़ा के निकाल देगा, बिकॉज इट विल बिकम इम्पेरमेबल। सो फॉर द प्लांट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इफ इट इज वेट कंडीशन में, इसमें स्टिकी नेचर है, उसमें प्लांट को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। So often impermeable, this soil has very good water storage capacity and make it hard for moisture and air to penetrate into it. Because that is its character. Water hold करने का capacity है, but after that, after the saturation, after the soil gets saturated, इसमें और ज्यादा moisture और because that is very fine, इसके अंदर gap नहीं है, that is the main reason. And when it is wet, it has sticky nature, and when it is dry, it is smooth nature. अभी clay pot बनाता है ना, clay pot is not sticky actually. वो कैसे है, वो सूखा करके कुछ फायर के नीचे रख के एक clay pot बनता है, तो clay pot is actually it is not permeable. उसके अंदर पानी डालने से भी पानी अंदर नहीं घुसेगा, sorry, means it will not affect the clay vessel. वो vessel को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन पानी तो ठंडा मिलेगा। The clay is densest and the heaviest type of soil. एक densest है, क्योंकि 5 soil sand soil होने के साथ यहाँ कितना होगा, 500 होगा, उतना ज्यादा, because that much of finer content है, तो गैप बहुत कम होगा, is closely related, closely associated है, तो इसका density and it has weight भी इसका ज्यादा होगा। Does not drain well and provides space for plant root to flourish. तो इसके लिए तो ये जगह नहीं देता है। So when if you are observing a paddy field, you can see वो नीचे से ये निकाल देगा clay content को। So these are the major type of rock soils. One is sandy soil, then silty soil, then the clay soil, and there is one more soil, that is loamy soil. Loamy soil means it's a mixture of all these things. इसके अंदर sand content होगा, इसके अंदर clay content होगा, इसके अंदर silt content होगा. So it has got the characteristic of all these soil. सब अच्छा characteristic इस loamy soil को मिला है. Because of the same, it has the ability to hold maximum water. Water को hold कर सकता है. So it is suitable for, इसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट भी ज्यादा होगा, as it has सिल्टी सोइल है, तो इसमें एक न्यूट्रिशन कंटेंट है, it can hold water है, water penetrate भी कर सकते हैं, it is permeable also, it is penetrate कर सकते हैं, it is permeable also, it can hold water also. So this is the best soil for agriculture, this loamy soil. And इसका color, it will vary from dark color, very dark to dark color होगा इसका main color. So these are the major soil types. जो बाकी का soil classification है, that we can study later on when we study about the soils of India and soils of the world, but the समय we can discuss. But in general, if somebody asks you what are the type of soil, based on grain size, you want to write this: sand soil, silt soil, clay soil, and the mixture of all these soil, that is loamy soil. So that's about the soils.
Yes, I think almost you know the all these things, but just rewinding all this. इसके अंदर कुछ डाउट है इसी एरिया पे? नो सर, लेकिन सर वो हाँ। जो जैसे फॉर्मिंग ऑफ सॉइल है ना, उसमें हाँ। ना जैसे हम आपको पहले भी बोला था ना, आपका बोर्ड से कुछ लिख देने से बाद में हम लोग पढ़ने से भी कुछ समझ में आएगा। फिर वो जो डायरेक्ट सिर्फ वेदरिंग ये सब दिए है तो ना, फिर नहीं, इसमें तो पैरल मेटल ये दिया है ना, इसमें नहीं ये नहीं ऊपर वाला। जी फॉर्मेशन जी, इसमें लिखा है। इसमें मतलब आप ये वाला नहीं, नीचे में एक तो था ना, ये तो जस्ट सॉइल के बारे में है ना डायरेक्ट, इसका जस्ट नीचे में था क्या? ये वाला वेदरिंग। ये जो ये फिजिकल वेदरिंग का थोड़ा मतलब आप अपना वर्ड से कुछ देने से कुछ फिजिकल वेदरिंग ये सब अगर हम पहले दिया ना, उसमें है, इसलिए तो इसमें हम ज्यादा नहीं दिया है। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, व्हेन वी स्टडीड अबाउट द वेदरिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी ना, इसमें है वो वो नोट्स ना, ज्योमोफोरी वो सब सेम ही होगा ना? वो नोट, इसलिए तो हम ज्यादा नहीं दिया था। ओके ओके, आई विल ऐड ओके, नो प्रॉब्लम। जी सर। तो ये ओके तो थैंक आज यू। अब नहीं देखेगा, कल देगा। ओके नोट तो। जी जी सर, हाँ, तो कल का वीडियो भी नहीं भेजा है सर तो? वो हमको कुछ आइडिया नहीं है, वो सब पंकज सर का है ना। जी सर। You just communicate with Pankaj sir. It would be much better. ओके सर, Uh, थैंक यू सर।